Hare Krishna. Good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So, good news is today we are starting with the new chapter, and that is chapter number 3. Where are your other counterparts? Please sit. So, before we start with chapter number 3, let's understand what was the crux in chapter number 2. Because chapter number 2 is, what is the name of the topic? What is the name of the chapter? Chapter number 2 का? Gita summarized. So, अगर chapter 2 समझ गया तो you have got the concise knowledge of the entire essence of the Bhagavad Gita. So, yes, someone tell me fast, what are the things we learnt in the second chapter? Don't tell me after completing the second chapter. Everyone is looking at me as if they were absent for all the lectures. Come on, tell me fast. We learned about the soul. Very good. Now, before that, what was one more thing? Very important. Arjun was perplexed and he asked Krishna his weakness. Weakness. The first thing. So that is the first principle. Bhagavad Gita अगर सीखना है तो first principle is शिष्यस्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम. Unless until you don't become a शिष्य, ये तो सब लोग गुरु बन के घूमते हैं. आप प्रभु जी हमको आता है, आप कुछ ऊंचा बताओ. ये सबको हमको आता है, कुछ ऊंचा बताओ. क्या ऊंचा बताएं? Please understand कि the first thing you all should remember is the first quality required to understand the Bhagavad Gita is शिष्यस्य हम. Arjuna is telling Krishna, मैं आपका शिष्य हूँ. और क्या है? यक श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे. इसे सबसे मेरे लिए श्रेयकर है. श्रेयस मीन्स विच इज गुड फॉर मी. विच व्हाट डज इट मीन? व्हाट डिड आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन श्रेय एंड प्रेय? याद है किसी को? हाँ. That it may sometimes be tasteless, but it is always best for you. तो श्रेय हम लोग अक्सर प्रेय ढूंढते हैं. हमको जो प्रिय लगता है वो हम करते हैं. बट भगवद गीता में भगवान क्या कहते, अर्जुना क्या कहते हैं कृष्ण से? भाई मेरे लिए जो श्रेय है, जो मेरे इसके लिए श्रेयस्कर है, वो मेरे लिए वो मुझे बताओ. एंड देन ही सेज शिष्यस्याम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. उसके बाद उसके बाद क्या होता है? आफ्टर ही सरेंडर्स, देन व्हाट इज नेक्स्ट? Krishna starts speaking, right? So what is the speciality of the second chapter? First chapter of Bhagavad Gita, Krishna doesn't speak a single word. And Bhagavad Gita starts with a very divine personality. What is that? Dhritarashtra. So first chapter starts with the very first sloka of Bhagavad Gita is Dhritarashtra. मगर पहले अध्याय में कृष्ण मुंह ही नहीं खोल रहे हैं. अर्जुन बोलते जा रहा है. कृष्ण एकदम स्माइल दे के सुन रहे हैं. हाँ भाई बोल. क्यों? जब अज्ञान में व्यक्ति रहता है वो बोलता है ज़्यादा है, सुनता कम है. हाँ, फैक्ट है. जब अज्ञान में रहता है व्यक्ति वो बोलता ज़्यादा, सुनता कम है. और जब आदमी थोड़ा ज्ञानी हो जाता है ना, तब उसके अंदर सुनने की चाह बढ़ती है कि भाई कुछ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मुझे सुनना चाहिए. कमिंग फ्रॉम प्रभु जी. अच्छे से प्लीज़ वेलकम. Please sit down. That is the first understanding. What is the first understanding? कि भाई पहले शरणागत हो जाओ, भगवान को पूछो और भगवान का शरण हो जाओ. मतलब गुरु के शरण हो जाओ तो गुरु आपको भगवद गीता समझाएंगे. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शरण होना मतलब not to understand Bhagavad Gita at your terms and conditions, but at the terms and conditions which are given in the Shastra. उस हिसाब से सीखना है. मैं बोलूँगा वैसा. No, that's not acceptable. After that, what did Krishna do? What did Arjuna? Krishna started speaking. And what was the first thing he told? What is the first important thing? What is the first segment? What is the first section he speaks? हाँ, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पहला वो बोलता है कि भाई तो पंडित जैसा बात कर रहा है, ये है वो है. उसके बाद शरणागत हो गया. उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट? ही स्पीक्स अबाउट द सांख्य योग.
Sankhya Yoga. What is that Sankhya Yoga? What is the size of the soul? What are the qualities of the soul? And what is that thing? It never dies. Nainam chindanti shastrani nainam dati pavakana chakleyodanti apuna saraswati maruta jatasya dhruv mrityum dhruv janma mrityasya. All the shlokas are spoken wherein it clearly makes us gives an understanding that भाई आत्मा हमेशा अमर है, जो मरता है वो है शरीर, और आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है. और फिर ठीक है ना, ये ज्ञान से हमको क्या फ़ायदा? भगवद गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि भाई आप जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पे जा रहे हो, उसके साथ नए शरीर में नए सुख और दुख भोगने पड़ेंगे. मनुष्य शरीर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर 84 लाख योनि में वापस भटकना पड़ेगा. किसी जानवर के शरीर, कभी गधा, घोड़ा, कीट पतंग सब बन के, कभी पेड़ तो कभी लता, ये सब में जाके एंड में आपको किस में जाना है? मनुष्य योनि में आने के लिए चांस मिल सकता है, गारंटी नहीं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ विशियस सर्कल और साइकिल, वेरी डेंजरस साइकिल. तो भगवान ने ये बताने का मकसद क्या है, इसके हमारे लिए क्या पिकअप पॉइंट्स क्या है या टेक अवे पॉइंट्स क्या है? ये है कि भाई हम जो आत्मा जो है वो अविनाशी है, इट इज़ फॉर एवर. बट दैट इज गुड पॉइंट और बैड पॉइंट. गुड ये है कि मैं मरता नहीं हूँ, मरता मेरा शरीर है, मैं मरता नहीं हूँ, मैं मतलब मैं एक आत्मा हूँ. दैट इज़ अ गुड पॉइंट. बट व्हाट इज़ अ बैड पॉइंट? जब जन्म लेगा तो शरीर लेना पड़ेगा, और जब शरीर लोगे तो उसके साथ सुख और दुख. और यहाँ पे सुख नाम का चीज़ तो है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है. हाँ, ग्रेडेशंस ऑफ दुख है. किसी को दुख ज़्यादा है तो किसी को कम है, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी, मगर कोई ना कोई दुख में ज़रूर लिप्त है वो व्यक्ति. इज ऑलवेज स्टक इन दैट साइकिल. सो इट इज़ बेटर. व्हाट इज द इंडिकेशन आचार्य सर ट्राइंग टू टेल from this saying confirmation given by Lord Krishna? He is trying to say, acharyas are trying to say, why we have to take repeated birth? बार बार जन्म क्यों लेना है? उससे अच्छा झंझट से बाहर निकलो. But then what are the root causes of this birth? Then what is the next segment we goes to? Tell me. You can see the Bhagavad Gita and tell, not a problem. He talks about devotional service, how हाँ. to reach. He goes directly to devotion service. First and foremost, he doesn't talk about devotion service in the second chapter. He doesn't talk about devotional service in the second chapter. He talks about the consciousness, how to purify your consciousness to do the devotional service. ठीक है. उसके पहले first and foremost, he teaches you a very important message. He tells, with a sword in hand, intelligent men cut the binding knots of reactory works. Open all of your 1.2.15. He clearly tells us, very important. He tells us how to cut. हम सब बोलते हैं, हाँ हम सब माया में लिप्त हैं, हम सब अटके हुए हैं, प्रभु जी भौतिक दुनिया में अटके हैं. Don't worry, if there is no Bhagavad Gita, all of you will open your बेस्ट फ्रेंड. हाँ, आपका बच्चा, बोलिए जितना आप बच्चे को प्यार करते हो उससे ज़्यादा तो आपका मोबाइल को प्यार करते हो. तो टेक आउट योर मोबाइल, जस्ट गो एंड टू गूगल. ऐसे भी दिन भर आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट जब ढूंढते रहते हो तो कभी कभार भगवद गीता भी ढूंढ लिया करो. जस्ट गो एंड गूगल आउट भगवद गीता सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 15. सो ही सेज, तो यू कट इट थ्रू you have to cut these knots, and then he says, yes, oh sorry, I'm in Bhagavad, I'm not in Bhagavad Gita. Sorry. Too many apps in my thing. Yeah. Then he talks about, after this, then he talks about the soul can never be cut, all the details he is giving. And then he comes to the segment is, चलो मान लिया आत्मा मरती है, फिर भी तू क्यों दुखी हो रहा है? Krishna tells Arjuna, why are you getting sad? If it is getting cut, fine. But if it is not getting,
all the people standing in front of you are anyhow were there earlier before the war, are right now here also, and will be there later also. Then you have to do your prescribed duty of a Kshatriya. And then he talks about, if you don't fight, it will cause you infamity. मतलब लोग आप पे हंसेंगे, आपके मजाक उड़ाएंगे. कैसे उड़ाएंगे? कि भाई तू क्षत्रिय होकर अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, युद्ध नहीं लड़ रहा है. यू हैव टू फाइट. एंड देयर इज टू पॉसिबिलिटी. युद्ध में दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जीतोगे या मर जाओगे. अगर मर गए तो एक क्षत्रिय के लिए क्या है, हमेशा क्षत्रिय युद्ध के लिए मौका देखता है. ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. लाइक ए क्रिकेटर, ही वेट्स कब टूर्नामेंट आएगा एंड आई कैन शो माई स्किल्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग, वॉट एवर द गेम ही प्लेस, उसका अपना स्किल्स दिखाना है. उसी तरह एक जो क्षत्रिय होता है अपनी वीरता दिखाने के लिए युद्ध का वेट करते. चांस मिला, ही विल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड ही विल फाइट. एंड इट इज सेड, वन हु फाइट्स इन war, that is a kshatriya, when doing his duty, if he dies, he gets heavenly planets. So it is a win-win situation for you, Arjuna. Why you are not fighting? If you win, you enjoy this kingdom, and if you don't win, you die, you are going to enjoy heavenly planets. So it is a win-win situation. So get up and fight. Then one who then he starts with that slight tinge of devotion. He says the important verse, vyavasa atmika buddhi. Very important verse that is. Vyavasa atmika buddhi eka guru nandana bahushaka anantascha abuddhayo avyavasayinam. He says, multi-branched. Even he is indicating on karma kand also. मंडे टू संडे सब लोग मंदिर जा रहे हैं, मंडे वाला नहीं तो ट्यूसडे वाला, सब स्टेपनी है, सबके पास स्टेपनी है. गाड़ी में तो एक स्टेपनी टायर रहती है. जस्ट सोचो अगर किसी के गाड़ी में 4 स्टेपनी टायर हो तो नहीं, कहीं एक आगे वाला धोखा दे दिया तो फिर सेकंड वाले ने भी धोखा दे दिया तो 4 रखे. तो हम तो इतने स्मार्ट हैं, कंपनी तो एक ही देती है गाड़ी के साथ. मगर आप क्या सोचते हो, मंडे टू संडे कोई ना कोई, मंडे वाले ने धोखा दिया तो ट्यूसडे वाला तो कर ही देगा अपना काम, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे वाला तो पक्का. और आजकल तो नया ट्रेंड है गुरुवार वाला, साईं बाबा. अरे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनको छोड़ के आपको 33 करोड़ 1 देवता पे कहाँ जाना है, और वो देवता है ही नहीं. क्यों? देयर इज नो मेंशन इन दैट शास्त्र में कहीं उसका उल्लेख ही नहीं है. ये तो हमने खुद अपने फायदे के लिए बना दिया. दैट्स व्हाई लॉर्ड सेज, आगे जाके बोलते हैं ना, कामे स्थिते हृत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता. बस काम से इतनो ये हो गए हैं कि भाई अन्य देवता पकड़ लेके, कोई देवता, चल तू ही सही, तू मेरा काम कर दे. दैट इज अ वेरी वेरी ग्रॉस फूलिश एटीट्यूड. दिस एटीट्यूड इज नॉट अ वेरी ब्राइट एटीट्यूड इन विच मंडे वाले से ट्यूसडे वाले से क्या करवाओगे आप, क्या कर सकते. कितना दुख का निवारण हुआ है, कितने लोगों का दुख निवारण हुआ है कर्मकांड करने से. एंड व्हाट टू टेक अबाउट कर्मकांड, भक्ति करने के बाद भी पांडवों का दुख भी कम नहीं हुआ. पांडवास वर द बेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण. फिर भी क्या उनका दुख का निवारण हुआ? Was Lord able to solve the problem of Pandavas when they were in the Lakshagraha, when Bhim was drowned? In fact, after the Lakshagraha incident, Lord is also doing Shraddha. हाँ मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, छाती पीट पीट के रो रहे. यहाँ धृतराष्ट्र एंड हिज टीम वो तो नकली आंसू बहा रहे थे, पर कृष्ण तो असली आंसू बहा रहा था. मैं क्या करूँ, मेरा भाई मर गया. और एंड में देखा तो ही इज ओनली द प्लानर, ही इज द डूअर. कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है. उसको पता है, क्या भगवान को पता नहीं था? बट एवरीथिंग वॉज डूइंग, बट ही डिड दैट इंसिडेंट फॉर सम बेनिफिट. जब भी कोई दुख आता है, भगवान का अगर भक्त हो तो उसके पीछे कोई कारण रहता है. एंड व्हाट वाज द कारण? क्या मिला उनको? क्या, कौन मिला है? क्या लाक्षागृह इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? द्रौपदी विवाह हुआ.
तो ये एक तरीका था. Deliberately he kept them in वनवास, बिकॉज पांडवास वर नॉट इंटरेस्टेड. उनको जरूरत नहीं था जमीन का, बंगला का. दे सेड ऐसे भी ये लोग मारने का बार बार कोशिश कर रहे हैं. पहले भीम को जहर खिलाया, फिर उसके बाद लाक्षागृह. अब मुझे नहीं जाना है. हम लोग देवर हैप्पी. माँ कुंती माँ के साथ वो लोग घूम रहे हैं. इनफैक्ट उसी दौरान एक चक्रधाम में जाके वो बकासुर राक्षस का मार देता है ना, वो जब वो फुल कार्ट लोड खाता है वो. सो ही किल्स हिम ऑल्सो. सो they were also happy. But again they came into the picture. Again then the Dvit Frida happened, that is the gamble match happened. Then Draupadi Vastrahana happened. So many incidents happened. So please, bottom line of the whole story is, don't think, हाँ प्रभु जी अब भक्ति में आ गए, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. प्रॉब्लम अपने कमाए हुए हैं, अपने कर्म से हमने प्रॉब्लम्स कमाए हैं. किसी और का अकाउंट का पैसा आपका अकाउंट में आता है? नहीं आता. उसी तरह आपके सुख और दुख आपके कमाए हुए हैं, किसी और के अकाउंट से नहीं आता. हाँ, आप जल सकते हैं मेरा पड़ोसी सुखी है सुखी है, बट अगर आप उसके अंदर झांक के देखोगे ना, ये दुखालय है, दुखालय में एवरीवन इज सैड. तरीका अलग है, बट एवरीवन इज सैड. सो दैट इज व्हाट लॉर्ड वाज ट्राइंग टू टेल कि भाई कर्मकांड इशू स्टार्ट किया, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ वन हैज टू कंट्रोल हिज सेंसेस. एंड व्हाट वाज द एनालॉजी ही गेव? व्हाट वाज द एनालॉजी ही गेव? यस, टॉर्टोइस. कैसा है टॉर्टोइस? कैसे करता है? limbs when required only it takes it out, but we keep our limbs all out every time. We want to be चंडी जैसे घूमते रहते हैं. कहाँ अच्छा आज चलो आज घाटकोपर में जाके खा के आते हैं, आज बॉम्बे में जाके वो आइसक्रीम खा के आते हैं. So we are always having our senses out, but Lord is saying like a tortoise keeps its limbs under control, one have to also keep his limbs under control. In fact, the last section full, he talks about two important things. One is how to control your senses. इतना स्ट्रॉन्ग बार बार बोला है कि भाई नाव को जैसे किस तरह एक नाव को हवा उड़ा के लेके जाती है, वैसे अपने सेंसेस को भी उड़ा के लेके जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? कैन वी कंट्रोल आवर सेंसेस? Then what do we do? Leave the class. Huh? What do we do? Give it a higher taste. So dovetail it with Krishna consciousness. So eat whatever you feel like you eat, but first offer it to Lord and then eat. पहले भगवान को भोग धराओ, फिर खाओ ना. कौन मना कर रहा है? Who's stopping you? In fact, Lord will also be happy. आप भी खाओ, भगवान भी खाओ. वो भी थोड़ा पुट ऑन करेंगे थोड़ा. नहीं तो आप जाके देखना, आप लोग को घर का डिटेल्स देखना, एकदम भगवान एकदम पड़ा है. एंड सी राधा रस बिहारी खा पी के एकदम, दैट्स अ बेनिफिट. सो आप भी खिलाएंगे तो खाएंगे. यू वोंट बिलीव राधा रस बिहारी का मेजरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम व्हेन दे मेक द ड्रेस. इट इंक्रीजेस, बिलीव इट और नॉट, इट्स अ फैक्ट. दे हैव टू कीप ऑल्टरिंग द ड्रेसेस समटाइम्स सो दैट द ड्रेस फिट्स टू राधा रस बिहारी. It's not a joke, you know, confirm. Color and hue changes, that is okay, that's an external thing. But how can the size increase? Marginally it increases. So Radha Rasa Bihari eats nice, घी में तला हुआ सामान सब खाते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आता. एक बार एक व्यक्ति भगवान को एकदम लो डाइट फ्री, आजकल का जो चल रहा है ट्रेंड, वो खिला रहे थे. तो देन वन वैष्णव वाज आस्किंग, भाई तुझे डायबिटीज़ है, तुझे कोलेस्ट्रॉल है, तुझे वेट लॉस करना है, तू वॉकिंग नहीं कर रहे, भगवान को जबरदस्ती वो सब क्यों खिला रहे? उनको तो अच्छा खिलाओ. सो द पर्पज इज, व्हाट द पॉइंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज, लॉर्ड इज सेड टेलिंग वेरी क्लियरली कि भाई डाउटेल एवरीथिंग विथ हायर टेस्ट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट सेक्शन ही टॉक्स अबाउट peace formula. And then one important warning also he says, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपरता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समदौ न विद्यते. जो भोग और ऐश्वर्य में लिप्त है, his only goal of life is how to do भोगा. कैसे भोगूं? अच्छा गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छे गहने,
अच्छे परफ्यूम्स, एवरीथिंग अच्छा, देयर इज नथिंग बुरा। अच्छा, जो भी है उससे संतुष्ट नहीं है, उसको और चाहिए। वो व्यक्ति जो है who is always running behind more and more and more, such person will never develop an interest towards devotional service. Whereas जो आदमी बुद्धिमान है, और बुद्धिमान का यहाँ एक ही अर्थ है, जो आत्म जिज्ञासा करे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस धरती में मेरा क्या काम है, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। दिस इज अततो ब्रह्म जिज्ञासा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल हैव टू डेवलप. So these are all the just a overall summary of the second chapter. So now we start the third chapter of Bhagavad Gita. So before we start the third chapter of Bhagavad Gita, let's understand the Mahatmya of it. अभी महात्म्य क्या है? What is the meaning of महात्म्य? Importance. Importance नहीं, benefits is a better word. Just नहीं, benefits. Benefits मतलब क्या है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको जब तक फायदा दिखे नहीं ना, वो आगे बढ़े नहीं. सो इट्स ए ऑल 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता हैव गॉट इट्स महात्म्य. एंड महात्म्य इसके लिए है, आप भागवतम देखो तो भागवतम महात्म्य अलग है, होल बुक फुल वर्जन ऑफ इट इज दैट. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द भागवत महात्म्य? भाई कोई 7 दिन सुने तो इसका फायदा है. यू नो व्हाट इज इट? 7 दिन का महत्व मालूम है क्या है भागवतम का? 7 दिन का महत्व, आई मीन इस आचार्य का दृष्टांत है. Either someone sees. It is said, जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं, भागवत भी 7 दिन का होता है. तो what does that mean? You get married to God. But इन नॉर्थ में, आई डोंट नो बट साउथ में तो होता नहीं, नॉर्थ में एक गौने का सिस्टम रहता है मालूम है. आफ्टर मैरिज, मैरिज इज फिक्स्ड एट अ यंगर एज एंड देन आफ्टर अ फ्यू कपल ऑफ ईयर्स द चिल्ड्रन बिकम बिग, उनका गौना होता है. एंड गौने में क्या होता है? देन यू गेट गो टू द, मतलब द गर्ल हैज़ टू गो टू द बॉयज हाउस. द बॉय कम्स एंड टेक्स द गर्ल टू हाउस. इट्स अ बिग सेरेमनी. सिमिलरली डोंट वरी, हमारा भी गौना होगा जो भागवतम से शादी करेगा, भगवान कृष्ण से शादी करेगा. एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ, द चैरियट ऑफ विष्णु, द विष्णु दूतास विल कम एंड से, बोलो आपका गौने का टाइम हो गया है, चलो. बट कैन एनीवन स्पेसिफाई गौने का टाइम कितना होता है, कितना वक्त में? किसी के घर पे 10 साल, तो किसी के 8 साल, किसी के 12 साल, एज द केस मे बी. सो सिमिलरली वी ऑल डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव गॉट, एंड गौना होने वाला है. बी श्योर, आपका आत्मा या तो यमदूत लेके जाएंगे या विष्णुदूत लेके जाएंगे. दैट इज गारंटीड. नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड यू वांट टू गो विथ, what type of person you want to go with. So that's why भागवत में भी महात्म्य क्यों कहा गया है कि भाई जब तक व्यक्ति प्रयोजन नहीं लेता है, he doesn't take the gets the benefit. हर चीज़ में काम करने के पहले मेरा क्या फ़ायदा. If I go and ask प्रभु जी ये करेंगे, मेरा क्या फ़ायदा? या तो आध्यात्मिक फ़ायदा या भौतिक फ़ायदा, और फ़ायदा तो चाहिए हर व्यक्ति. उसके बगैर nobody wants to do any work. So the best concept what we understand from this is, that is why acharyas have given us this, rishi munis have given us this concept of mahatmya. So the third chapter of mahatmya ke liye, this is very small story but a very nice and interesting story. Every story has got its own, every mahatmya has got its different identification. Like I have already told, I don't remember. I have already told you all that I have already told you all. Always remember, you can do devotion service with an expectation. It's like, don't get carried away with things, but I'll give you an example.
एक बेटा पिता का सेवा करता है, अगेन आई गिव द सेम एग्जाम्पल, एक बेटा पिता का सेवा करता है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण वो इसके लिए सेवा कर रहा है क्योंकि वो उनका पिताजी हैं, वो उनका बेटा है, he loves his father, he serves his father. And the second possibility is he wants to inherit his father's property. पिता का जायदाद चाहता है. There are two possibilities. Generally there are only two. Third possibility होती नहीं. Okay. या तो खुशी से सेवा करना चाहता है, या चाहे वो खुशी से न करता हो, but since he is having something which he can inherit, money, land, whatever it is. But which son is better? First one, serving without respect. Why? Because that is selfless. Selfless. Arey, the material reason is anyhow after his father's death he is going to inherit. Anyhow you are going to inherit his father. The son is going to inherit the father's property. But here the difference is, had he served with love, he would have got his blessings also. Property anyhow he is going to inherit, but the tragedy is he is going to inherit something which even he has to leave and go. But what he would get is the blessing. Similarly, one may serve God. तो भगवान अगर आप सेवा कर लोगे, ये महात्म्य सुन के, महात्म्य सुनाना एक प्रथा है, सुनाऊंगा ज़रूर, बट उससे कैरी मत हो जाना. डोंट गेट कैरिड अवे विथ इट. द रीजन इज वन मे सर्व लॉर्ड, बट लॉर्ड क्या करेंगे, आपको कुछ और दे देंगे. हमेशा कहता हूँ, भगवान जब ज़्यादा मस्का पॉलिश मारते हो ना, उसको तुच्छ दे देता है. तुच्छ मतलब जो उसको लगे, अरे भगवान ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मेरी 2 फैक्ट्री का 4 फैक्ट्री हो गया, या मेरा धंधा जोर से चलने लगा, या मेरा लड़के का प्रमोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब भौतिक चीज़. दैट इज कॉल्ड एज तुच्छ. दैट्स नॉट टैंजिबल. बट इफ ही सर्व्स द लॉर्ड सिंसियरली, देन ही गिव्स हिम कुछ. पहले तुच्छ बेकार चीज़, फिर कुछ. कुछ में क्या मिलेगा आपको? माइट बी लिटिल बिट ऑफ डिवोशनल सर्विस, थोड़ा सेवा मिलेगा, थोड़ा अरे सेवा मिला, क्या क्या सेवा करना, कभी कभी रो के सेवा करते हैं लोग, इट्स बैड. दैट इज कुछ मिला है. एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट, सी ऑलवेज इट इज सेड, जब आप दही मथते हो तो मक्खन निकलता है, बट मक्खन के साथ क्या निकलता है? छाछ. मटेरियल बेनिफिट्स आर लाइक छाछ. ऐसे भी मिलने वाला है. डिवोशन करने वाला व्यक्ति को ऐसे भी मटेरियल बेनिफिट्स मिलने वाला है. बट अलॉन्ग विद दैट, द बिगेस्ट एडवांटेज और बिगेस्ट थिंग विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इज आध्यात्म बेनिफिट्स, दैट इज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स. एंड जो व्यक्ति पूरा अपने आप को भगवान का स्वरूप सरेंडर कर देता है, व्हाट डज ही गेट्स? ही गेट्स सब कुछ. तीनों को मिलता है. जो भगवान है, भगवान 500 रुपया मेरे को देख लेना, कुछ दे देना, उसको तुच्छ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा, या किसी को सब कुछ मिलेगा. सो यू वांट टू गिव इन विच कैटेगरी, दैट यू हैव टू डिसाइड. सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ भगवद गीता, 3rd चैप्टर. कौशिक मुनि के परिवार में कौशिक मुनि के परिवार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था जड़. था तो ब्राह्मण मगर वेस्ट. डोंट वरी, कलयुग में ऐसे बहुत घूम रहे हैं. वन ऑफ माई कजिन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, इस जनेऊ का क्या काम है? एंड इफ आई टेल यू द रीजन ना, you'll go bonkers. मतलब पीठ खुजाने में काम आता. See how foolish, how crazy, how pathetic these people are. He's saying to become a Brahmana is a privilege, but just becoming a Brahmana, just being born in a Brahmana family doesn't
serve you the purpose. It's like एक डॉक्टर के घर पे पैदा होने से डॉक्टर हो ही नहीं जाता है, एक वकील के घर पे पैदा होने से वकील होता नहीं है. You have to study and then practice the profession, right? Just by getting born in a, but these people who call themselves Brahman, but are they really Brahmanas? Brahma janati iti Brahmana, one who should know about God. He doesn't know anything. He doesn't know who is Sai Baba also. He worships that person also. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोले? मैं ब्राह्मण कुल में हूँ. अरे ब्राह्मण कुल में हो अच्छी बात है. That is the first impetus you have got. But further, what Brahmanical work have you done? आपने क्या ब्राह्मण वाले कार्य किए हैं? याद रखना, आज भी हम वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ रहे हैं. वो पहले कौन थे? डाकू. By profession he was a degraded personality. बट उसका वही व्यक्ति जब गुरु का आश्रय लेता है, उन्होंने किस गुरु का आश्रय लिया था? नारद मुनि. नारद मुनि का आश्रय लिया, देन उसका जीवन कैसे हो गया? फ्रॉम रत्नाकर डाकू ही बिकेम वाल्मीकि द ग्रेट. एंड आज पूरी दुनिया उनकी रामायण को पढ़ती है. व्हाट टू टॉक ऑफ दैट? हु वाज वेद व्यास? सन ऑफ अ फिशर लेडी, फिशरमैन, फिशर लेडी. एंड पराशर भट्ट मुनि से पैदा हुआ जो बच्चा था. दैट टू ही वॉज बॉर्न ऑन ए इमीडिएट 1 second ही वॉज बॉर्न. ही वॉज नॉट, डिडंट stay in his mother womb for 8 months or 9 months and then he came out. No, he was born immediately. And immediately he was born as a 16-year-old boy and immediately left. But then finally, from whose womb did he come? He came from the womb of a fisherwoman. So this is a wrong attitude people have got. Oh, I am born from a high kul, I am higher, he is born from a low kul. कुल से कोई होता नहीं है. आप कैसे बर्ताव करते हो, how you behave, how you act and how you follow the instruction given by your spiritual master. First and foremost, you accept a spiritual master, that itself is a great thing. And after accepting, following his instructions without in a challenging mode. Hey, why I should do? Why I should chant? मेरे को chant नहीं करना है. मैं 2 राउंड करता हूँ, बस हो गया. अपने हिसाब से करूँगा, करो, फिर भगवान भी मिलेंगे. So this Brahmana was, though born in a Brahmanical family, this Jada was, Naam itself is Jada. So foolish. He used to do all unwanted things. Meat eating, intoxication, illicit sex, gambling, going to prostitutes, everything nonsense he used to do. And then call himself a Brahman. Don't worry, in Kali Yuga this you will see every nook and corner. What these Brahmanas, these type of Brahmanas are lots and lots of them are available in Kali Yuga. Who though come from a Brahmanical family, do not follow the Brahmanical rules and regulations. And he was also into business, into trade of wrong things. With all this, he went to a far off city from his hometown, earned lots of wealth, बहुत सारा खूब सारा पैसा बनाया. And when he was coming back, उस ज़माने में तो फ्लाइट ट्रेन तो अवेलेबल था नहीं. Was coming back walking and he was staying under a tree. On that night he stayed under a tree. But उस दिन रात को उस पेड़ के नीचे जब वो बैठा था, आराम कर रहा था, कुछ चोर डाकू आए, उसको पकड़ के उससे पैसा लूट के उसको मार के ख़त्म कर दिया. They beat him to death. एंड ऐसा अनटाइमली डेथ होता है तो क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? प्रेत योनि में जाता है. He became a ghost. Here, ironically, everywhere it happens. कितने लोग यहाँ भक्ति करते वक्त आपके माँ बाप बोलते हैं भक्ति मत कर बेटा? कितने लोगों के वहाँ होता है ना? काफ़ी लोगों के वहाँ होता है कि नहीं? भक्ति मत कर, तिलक मत डाल, हेयर कट मत कर, ऐसा, हाँ, चाहे लंबे लंबे बाल रख चलेगा, बट ऐसा मत. दीज आर ऑल जनरल रेजिस्टेंस. वो भी ऐसा ही था, मगर उसका बेटा कैसा था? देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज ना ऐसे केस में. या तो बेटा इज 1 स्टेप अहेड ऑफ द फादर, और ही इज हाईली स्पिरिचुअल. चाहे वो प्रहलाद महाराज का स्टोरी क्यों ना हो जाए,
How was Prahlad Maharaj? He was also opposite to what his father. What did his father wanted him to say? Jai Hiranyakashipu. And what he used to say? No, I will not say Jai Hiranyakashipu. I will say Jai Namo Narayana. तो उसके लिए विष्णु भगवान ही सबसे उत्तम थे. That time it is said that his son, that is his Jada's son, he was spiritually inclined and he was following all the Brahminical rules and orders. He was doing the recitation of all the Shastra, Bhagavad Gita and all. उसका recitation करता था. But he was spiritually inclined. But अचानक जब उसको पिताजी का बारे में पता चला कि his father is missing, he started inquiring about his father. यहाँ वहाँ सब inquire किया. कुछ मिला नहीं तो घर से बाहर निकला. He started going in the direction in which his father had gone and searching him. Finally he met one of his father's friend, old friend, and from him he came to know that his father has been killed. So he said, now I have to do something for my father, because he knew very well अब ये प्रेत योनि में चले गए हैं, तब क्या करूं? तो उन्होंने बोला चलो मैं काशी जाता हूँ, काशी में जाके पिंडदान करके आता हूँ, श्राद्ध करके आता हूँ. अगेन काशी जाना है तो उसको चल के जाना पड़ेगा, तो चल के जा रहा था. थोड़ा दिन 2-4 रात के बाद एक रात जाके कोइंसिडेंटली उसी पेड़ के नीचे जाके वो भी पहुंचा जिस पेड़ के नीचे उसके पिता की हत्या हुई थी. He went under the same tree and he was sitting there. And as usual, he was reciting the 3rd chapter of the Bhagavad Gita. Suddenly he saw a divine light. And there he saw up was his father. But this time he was wearing yellow dhoti. He was blackish in color. He was having kirita, mukut, everything he was having. He was looking exactly like Vishnu. By the way, don't be shocked. Those who go back to Vaikuntha Loka look exactly like Vaikuntha Loka Vasis. जैसे आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिकन वासी जैसे दिखोगे ना, दिखना चाहिए ना. वहाँ पे सब गोरे गोरे. अफ्रीका में जाएगा तो सब आपको काले काले दिखेंगे. Because that's how the people of that place are. So similarly, when we will die and we will go back to Godhead, we will go back to Vaikuntha. If you go to Vaikuntha, if you go to Goloka, then your roop may be different. But in Vaikuntha, if you're going, you will also be having the same Swarupa. Maharaj told this n number of times. In fact, है ना, कई बार लोग पूछते हैं भगवान का स्वरूप ऐसा है, इसका क्या गारंटी है? अरे भाई, रीड द भागवतम, रीड द ध्रुव महाराज स्टोरी. ध्रुव महाराज का स्टोरी में ही क्लियरली सुखदेव गोस्वामी क्लियरली मेंशंस the form of the Lord, how he is wearing kirita, how he is wearing kundal, how he is wearing the fragrant garland, Vaijayanti Mala, then Kaustubh jewel, Srivatsa. Everything is, nothing is imaginary, everything is mentioned officially in the Shastra. So he saw his father in a divine position. He said, what happened? He said, son, I had become a ghost and I was suffering a ghost yoni here. But since you read the 3rd chapter of the Bhagavad Gita, you recited the 3rd chapter of Bhagavad Gita, I have got the body of I got liberated and I have got the body of a Vaikunthavasi. So I am looking at a Vaikunthavasi. He said, okay. He said, beta, now you don't have to go to Kashi to do Shraddh. Shraddh करने के लिए आपको काशी जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ 3rd chapter of Bhagavad Gita पढ़ लो, मेरा श्राद्ध हो गया. He said, any more instructions you have, father? He said, I got one more instruction. What is that? You know, my brother and few of my ancestors are also suffering in the same hellish condition. They are not in Pret Yoni, they are in hell. नरक में सड़ रहे हैं. Please, क्या आप उनको कुछ बचा सकोगे क्या? ना करना क्या? बस भगवान का अनुष्ठान करके
take the permission of the Lord, taking the permission and invoking the Lord, you recite the 3rd chapter of Bhagavad Gita. And if you recite the 3rd chapter of Bhagavad Gita, they will be delivered from the hellish conditions out. They will be pulled out of the hellish conditions. As instructed by his father, then the aeroplane came, his father sat on the aeroplane and he went back to Vaikuntha. So the son came back. The son came back to his house, and there he prayed to Lord Krishna and recited the 3rd chapter of Bhagavad Gita. Immediately, it's mentioned clearly in the Mahatmya, the 3rd chapter, that Vishnu Dutas went to Yamlok and met Lord Yamraj, and he told him, Lord has sent a message. You will have to release all those who are suffering in the hell. Immediately, when he completed, by the time he could complete the 3rd chapter recitation, he recited in a very detailed manner, taking individually each and every ancestor's name, and they all got liberated, and literally they were transferred from hell to heavenly conditions. And after that, they were again given birth. Mind you, ये मत सोचना कि मेरे भक्ति करने से मेरे पिताजी, one person came, I'm talking a very old story. My father is a very bad man, Prabhuji. What should I do? I am doing devotion. By my doing devotion, he will get liberated. This is what Shastra says. So what does this mean? Yes, he will get liberated, but don't take the liberation literally. He will be given a conducive environment in which he will be able to do proper devotion service in another birth, and then only he can go back to Godhead. It is not that, oh, aap devotion karoge and wahan pe he'll get wings and he will start flying. No. He will get wings and he will start flying. No, it is not the condition. He will be only able to do it only when you are, by your devotion service, he will get a higher platform in which a conducive condition he will be able to do devotion service. So this is the Mahatmya of the 3rd chapter of Bhagavad Gita. So अगर कुछ भी इस से ना करे, it's very cold. Yeah, very cold. Okay. हाँ. What is so special about 3rd chapter? ऐसा क्या है? पढ़ेंगे ना bro. It's like asking the climax of the movie. कौन है murderer, कौन है पहले बता. अरे what is the use there? Then what is the use of seeing a suspense movie? If you want to see the suspense movie, you see the whole movie ना. हाँ, this fellow must be the criminal, this one is the murderer, and end में कोई और निकलता है. That's the fun of it, right? अब वो पहले बोलते नहीं वो नौकरानी murderer है. पर क्या है? I know this is the murderer. Then what's the fun of it? See, Prabhu, it's first and foremost, as I told you, don't take the Mahatmya seriously. I will recite for my father's liberation, for my grandfather's liberation. No, that should not be the core purpose. That is again going to be the chas. Makhan to kya hone wala hai? Bhakti. Bhakti milega. And what is the name of the 3rd chapter? And mind you, Karma Yoga is so difficult, so complicated and so elaborate that Lord has spoken 3 chapters on it. 3rd, 4th and 5th. All 3 are on Karma Yoga. All the 3 are on Karma Yoga. So just don't take one chapter and the literal sense. There is another story, I think if I am not mistaken, the second chapter of Bhagavad Gita, where a prostitute recites, first ka. The first chapter of Bhagavad Gita talks about a prostitute and a parrot which was there in the prostitute's thing. Prostitute goes and recites when a person dies in the road, and everyone was wondering, this prostitute, how could she bring this dead man to life? And she says, no, I recited the 1st chapter or 2nd chapter, that I don't remember, I have to check out the books. तो कहने का मतलब क्या है कि see, it's like, if one follows the Karma Yoga properly, these things can be done, but it's very difficult to digest. There's one story in the Mahabharata. Once one sadhu was sitting and doing tapasya under a tree.
And then there was a bird which passed some motion or loose motion, I don't know, on that sadhu. So हम लोग में तो कहते हैं ना अच्छा है ना, अच्छा होगा. But he could not accept it. He was very angry. बहुत गुस्सा आया उसको, बहुत गुस्सा आया उसको. अरे, how come this bird is shitted on me? He just looked at it with angry eyes. There's a story in Mahabharata, true story. And looked at the bird, and the bird was literally burned to ashes. He was wondering, अरे मेरे तप में इतना बल है कि मैं सिर्फ देखने मात्र से वो पक्षी भस्म हो गया. Then afternoon time, his time was to do madhukari. ओम भवती भिक्षां देहि, ओम भवती भिक्षां देहि. तो गया एक घर पे जाके, तो बोली रुकिए मैं देती हूँ. And she took a lot of time to come out of the house and give him the bhiksha. He was very irritated, was very angry. And when she came, started staring at her with his same eyes. And the lady said, okay Baba, don't stare with me. I don't think I am that bird who will get burnt with your vision. Baba was wondering, my God, how did this lady come to know? मैं जंगल में बैठे अकेले में गुस्से से देखा और पक्षी भस्म हो गया, और यहाँ पे मैं आके बैठा हूँ एंड यहाँ पे मैं इससे मांग रहा हूँ. एंड आई वॉज नो डाउट ही वॉज एंग्री. ही वॉज लुकिंग एट हर विथ हर strong eyes, with angry eyes. But then she said, nothing is going to happen to me. Don't think I am that bird, I am going to get burnt. I am not going to get burnt. So the sadhu said, I will have to find out. How did she get angry? How did she know that I burned that bird in the jungle? Immediately he went, sorry, I am very sorry. Please tell me, how did you come to know? She said, first and foremost, I'll tell you why I was late. My mother-in-law and father-in-law are very sick and very old. I was serving them food. That is why I could not come immediately. And that is the reason why I didn't come. But if you want to know from where I got this bala or this knowledge, go to the next village. And there is a butcher. Kaun hai? Butcher. Go and ask that butcher. He will tell you how I got this bala. So this fellow is confused. Huh? So first thing was, it was very funny day for him. Crow shitting on him, and then he looking at the bird, and the bird getting burnt off. Then this lady telling, don't tell me this. Said, no, what more is in stock for me? Let me see. So he went to the next village. He searched for that butcher's house, butcher's shop. And there the butcher was, check, kitna pav kilo, आधा kilo, de raha tha. So he went and asked him, I want to speak to you. He said, who? That lady has sent you. Got a third shock of his life. That lady has sent you. And nowadays, all business are in chain. Like one doctor sends you to a pathologist. The pathologist goes, oh, us doctor ne bheja, acha isko itna ghatta hai. So it's like a chain. But here it was not like that. So immediately he said, go inside and sit. I'll come. बेचारा जाके बैठ गया. It was below his, against his rules and regulations, sitting in a butcher shop, a sadhu sitting in a butcher shop. But then he was chum kar raha tha. Then finally he came. He said, you will have to wait for some more time. Why? It's time to serve my parents. There she was serving her in-laws, and here he was serving his parents. And then after 1 hour he gave food to his parents, massages their legs and all. Then he said, you want to know how I know everything? You just do your karma properly, everything will be all right. You will be able to get all these type of powers. He was diligently doing his seva of his parents. She was diligently doing the seva of her in-laws. So what does this mean? कि भाई अपना स्वकर्म, इवन लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता, जो अपना कार्य ढंग से करे और दूसरा का कार्य करना, मतलब वर्णाश्रम छोड़ के दूसरे का कार्य करना भयावह है. इट इज़ वेरी डेंजरस. इट विल टेक यू डिग्रेडेशन.
And that is what is happening in Kali Yuga. In Kali Yuga, what is happening? Quote unquote, you must all have gone to and heard about a Brahmana opening a chicken shop and he's selling chicken, though he doesn't eat. He doesn't he doesn't eat. He is trying to be very pious. But the activity what he is doing is not Brahminical. A Kshatriya wants to open a shop and a Vaishya wants to go and join the military. It's craziness. One has to follow his Varnashram Dharma seriously, one can achieve it. But then, these are rare cases. तो ये पकड़ के आप बैठोगे क्या भाई, I'll just serve my parents, then I will get all Ashta Shaktis and all Ashta Siddhis and all that. These are all rare cases. It's just mentioned in the Mahabharata. This story is a true story in the Mahabharata. But the point what is trying to say, unless and until one achieves the complete success in that, one cannot achieve those things. Just by looking at that, the bird got burnt. What does this mean? He was doing his tapasya very nicely, but one should not get proud about it. He was trying to show the same anger to that lady, and the lady said, don't worry, what you are doing, your tapasya, usse mujhe malum padega kya? मैं भी तपस्या कर रही हूँ, मगर मेरा तपस्या का तरीका अलग है. Serving in-laws is also tapasya. Serving your parents is also tapasya. So whatever activity you do sincerely, by that you can get the desired result. Okay, so whatever designated activity, not any activity. Who will designate that? That is what you have to be under a perfect spiritual master. 2. Whatever activity you do, you should be guided as per the Shastra also. For example, if you are a Vaishya can do trading, Goraksha, Vanijya. It's mentioned in the Bhagavad Gita. Everything is mentioned. The problem is we don't open the book and read. Krishi, Goraksha, Vanijya. Ye Vaishya Dharma hai. So the birth will decide. Yes. And that was also decided by, that is also given in the Bhagavad Gita. Clearly it says, Chaturvarna Maya Shishtam Guna Karma Vibhagas. What does this mean? मैं चतुर्वर्ण का मैंने सृजन किया है. I have created it. Chaturvarnam Maya Shishtam Guna Karma Vibhagas. This is more important. As per your guna, as per your karma, and as per your propensity. No, as per your karma, you will be a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya. No, not just as a karma. Birth will not decide. By birth, you will be given an impetus. By birth, you will be given an impetus. Then, as per the impetus, if you follow that thing under the proper guidance, even if you want to do a Vaishya class or you want to be a Kshatriya, no problem. But then you will have to do it sincerely. So whatever activity you do sincerely, not decided by your birth, because if a Brahmin goes into business, so he is no longer a Brahmin, he is a Vaishya. Yes. And he has to do his business properly. Yes. It's not necessary that he is not doing his designated work. But he has lost his purpose, goal of life. If he is remaining a Brahmin and if he is doing it, then it is. And first and foremost, how does one become a Brahmin? By his activity. No. This is your personal thinking. Shastra says totally different. No, caste was created later on. Nothing was created later on. Originally, whoever was a... Nothing was created later on. Either you speak or you listen. First and foremost, Shastra clearly says, Janma jayate Shudraha. Everyone is born as a Shudra. First and foremost, everyone is born as Shudra. Secondly, how much knowledge do you think you have regarding a Vaishya, Kshatriya and a Brahmana? Shastra clearly says, all three have got Dvija. They have to be taken second birth. And what is that? Dvija means to take birth again. A bird is also called a Dvija. Okay? Bird doesn't directly give birth to a bird. It gives birth to an egg. And from an egg, a bird comes out. So that is called as Dvija. For a human being, Dvija means Upanayan Samskar. That is Dvija. He has still not become a Brahmana. Then he becomes Vipra. How does he become a Vipra? He starts studying the Shastra.
And finally, it's like just by admitting you in a medical college, you don't become a doctor. When you complete the entire studies, you come out, then after completing your internship, this, that, everything, then you are awarded a medical degree. Even same applies to lawyer, same applies to any profession. Even in CA, you have to do so much of articleship. Then only you are given a CA tag. It's not that I have completed my CA studies, give me a CA tag. They will not give you. So the bottom line is, Janma Jayate Shudra. Then when your Upanayam ceremony is done, then you become Dvija, then you become Vipra, and then Brahma Janati iti Brahmana. So these stages are there. It is not like I am born a Brahman, but I am doing Vipra, I am doing business. No. That's a blunt way of approach. So that is what you have to understand, that it is क्रमशः होता है. कोई भी कॉलेज में जाओ, कोई भी स्कूल में जाओ, नेक्स्ट डे टुडे आई हैव जॉइंड साइंस, सो आई बिकम बीएससी ग्रेजुएट और आई बिकम एन आईटी ग्रेजुएट. नहीं होता. हर चीज़ में क्रम होता है. ठीक है. With this we would like to end today's class. Do you have anybody has got any doubts, questions, can ask.